also part of Indus College of Law. So I'm introduced about today's session speaker, Sir Muhibullah. He's a former vice president of GSLC Mooting Society. Mr. Muhibullah brings extensive experience in moot court and mock trials, having participated in and won international competitions. He will share his expertise with us today. So the today's topic is our session is significance of mooting. Once again, I am pleased to introduce our guest speaker, Sir Muhibullah, who will start session today. Sir, So please introduce yourself and tell about expertise and then start our sessions. Okay. सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम to everyone who has joined us in this session today. Secondly, I hope you guys are doing well on your ends. Before introducing myself, I'm not a traditional instructor, not a traditional teacher. I would like to request you guys to make this session as interactive as possible. The interactions between a theoretical lecture only adds or contributes to our growth, our learning. Okay. My name is Mirza Muhibullah. I'm currently a practicing lawyer in the subordinates of courts of the Sindh, subordinate courts of the Sindh. Apart from this, I'm also working as instructor of various of law courses such as legal drafting, commercial contracts, and other things. I'm also giving my expertise as administrator in a private education institutions, and these are my professional commitments right now, currently. However, I have completed my LLB from Governments and Law College, which is based in Hyderabad. I have also been a former vice president for a consecutive 3 years of the same college, Mooting Society. If you talk about the experiences I have in my moot courts, I have been part of at least 15 moot court competitions. However, in different capacities. I have been a participant. I have been a researcher, oralist. I have also been awarded as best oralist in an international moot court competition. We have won consecutive 2 moot court competitions in Pakistan for our own college. Now I'm currently giving my services as adjudicator and coach for these moot court competitions. Okay. So this is my introduction. What I'm currently doing, what I have done in past, and now we are moving further to the topic which I have been provided by Lawstairs, and specific Pradeep Kumar, who is a good colleague and a friend to me. The significance of mooting. Before starting the topic, I would certainly like to ask you guys about your own experiences. For example, my first question to you guys is that do we have all law students here? We have at least 31 participants. Yes, sir. Okay. And what is the rate of the diversity? I would request all participants to just write down from which city you belong. वो अपने chat box के अंदर लिख के यहाँ पे for everyone पे भेज दें. So actually we would be getting to know about the diversity we are having in this particular lecture. We are starting from KPK Peshawar and following to Karachi, Mansehra, Islamabad, Hyderabad, Kashmir, Islamabad, Hyderabad, Sakhar, Karachi. Okay. Now, the purpose of this thing was that actually
these 31 participants are diverse in nature. Maybe a particular participant is studying in a prestigious institute. However, other participant is not so privileged. But when we are on one page, on one session, this is the golden opportunity to distribute your learnings all over the diversity. We have people from Mirpur Khas, almost Bihari, almost every corner of the Pakistan. And that's a very inspiring and impressive fact, to be quite honest. Okay. Another question to you guys. Okay. How many of you guys have been engaged in a moot court competition previously? कुछ पता है इस चीज के बारे में? Have you been a part of a moot court competition before this particular session? Okay, we have one yes. Okay. So हमारे पास majority is no, but we have some people, they do know about the moot courts. Okay, that's very perfect. Acha, someone is typing IIUI, International Islamic University of Islamabad. I have been engaged in their mock trials more than once as an adjudicator. So I do have an idea. Any person belonging from International Islamic University Islamabad does know about the moot court competitions. क्योंकि I do know कि वो continuously इस चीज को cater करते रहते. Okay, perfect. आज का जो हमारा session है, just because 45 minutes are not very long time, या इसको बोलते हैं sufficient time to cover out the whole topic, but we'll try to get the basics. We'll try to clear the concept of a moot court competition, and जो मेरी expertise है, मेरी personal experience है, what I think a newbie, a person who has just participated or is planning to participate in a moot court competition should know certain aspects. तो हम उस चीज के बारे में बात करते हैं. ठीक है. सबसे पहले what is a moot court competition? Sir, I think so we will go to the basic because most student doesn't know about the mooting. Then that's why I say to them. नहीं, perfect. I'm starting from the zero. We'll go from 0 to the 10. Don't worry about it. सबसे पहले मूट कोर्ट कंपटीशन क्या चीज होती है? अगर मैं इसको आसान लफ्जों में बोलूं, मूट कोर्ट कंपटीशन एक फर्जी अदालत है. एक इसको बोलते हैं ना, जैसे हम लोग जब we were in the schools, we had the mock test. वो असल टेस्ट नहीं होता था, लेकिन it was just the mock test. Same goes with the moot court competition. इसके अलावा इसको मैं और एलेबरेट इस तरीके से करूंगा कि moot court competition is to imply your theoretical learnings in your practical experience. ठीक है. I was privileged to be a part of a gene picture competition which is organized by ICRC, International Committee on Red Cross. It was held in Albania. It also had a short training session regarding IHL, International Humanitarian Law. Actually, most of the moot court competitions which happen all over the world are related to international humanitarian law. क्योंकि जो moot court competitions होते हैं उसके अंदर appeals के ऊपर जो होता है pleadings होती है. ठीक है. और जो mock trial होते हैं वो किसी और एस्पेक्ट को कवर करते हैं. फॉर एग्जांपल a particular case which has been filed before a court. ठीक है. अच्छा, Ishmael Ishtiaq is actually experiencing some distortment in my sound. Is there anyone who can help me कि दूसरों पे ये आवाज सही आ रही है? Am I audible? Everything is clear, sir. You will go to continue. Okay, I'll continue. ठीक है. So when I was there,
in Albania or Jean Pictet. Jean Pictet is a wholesome experience. I'll request you guys, अगर आप में से किसी को भी opportunity मिले, if you guys ever get a chance to participate in that particular competition, please करिएगा. Just because that's not a moot court competition, but that will surely add to your expertise. तो उनका एक मोटो होता था to bring law out of books. To bring law out of books. Usually law का जो subject होता है consider होता है बहुत dry subject, ठीक है. और एक तरीके से जिसको बोलते हैं हम लोग, बस एक किताब होती है. We are the custodians of the law and we have to seek the enlightenment from the sources. तो वो जो sources होते हैं हम उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और हम लोगों को उसी को अप्लाई करना होता है. We cannot make things in our way, but we have to follow the precepts. तो जो लॉ है in particular वो बुक्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है. तो उन लोगों का मोटो होता था to bring law out of the books, and I consider mooting as a similar or closest experience to it. ठीक है. क्लोजेस्ट एक्सपीरियंस क्यों बोल रहा हूँ मैं इस चीज को, इस वजह से क्योंकि हम लोगों के पास एज बीइंग अ लॉ स्टूडेंट हमारे पास कोई और ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम लोग कोर्ट्स में जाके प्लीड कर सकें. हम लोग अपनी प्लीडिंग्स को एनहांस करने के लिए कोई और प्रैक्टिस कर सकें. तो द ओनली थिंग या द ओनली जिसको बोलते हैं फिजिबल ऑप्शन वी हैव इज अ मूट कोर्ट और अ मॉक ट्रायल, जिसके अंदर हमें ये समझ में आता है कि हमारी जो थ्योरेटिकल लर्निंग्स हैं क्या वो प्रैक्टिकली अच्छी हैं या नहीं, या उस प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के अंदर किस किस्म का जिसको बोलते हैं हम लोग बेहतरी लेकर आ सकते हैं. व्हाट आर द फ्लॉज वी कैन वर्क ऑन एंड व्हाट आर आवर गुड एस्पेक्ट्स. ठीक है. तो सबसे पहले ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था कि मूट कोर्ट होता क्या है फॉर द वंस हु डज नॉट नो. अब हम लोग इसके ऊपर आते हैं कि मूट कोर्ट एक्टिविटीज या सिग्निफिकेंस किस तरीके से ऐड होती है मूट कोर्ट से किसी भी लॉ स्टूडेंट की पर्सनल एक्सपीरियंस में, पर्सनल जिसको बोलते हैं लर्निंग के अंदर. अच्छा, नंबर 1, moot court competition or a moot court activity is known as an extracurricular activity for law students. Extracurricular means something which is out of the syllabus but adds or contributes in your learning or the growth. Extracurricular activities के ऊपर in the University of Pennsylvania there was a research conducted जिसके अंदर एक सर्वे किया गया और उसके अंदर ये देखा गया कि there was a particular group of students जिसको theoretical lectures दिए जाते थे और traditional way के अंदर teach किया जाता था. 2 साल की उनकी डिग्री होती थी और जब वो निकल के आते थे तो the person which studied for 2 years in a traditional way, in only theoretical way, वो एक अच्छा प्रोफेशनल बनने से कासिर होता. और वही स्टूडेंट जो 2 साल की स्टडी करता था, थ्योरेटिकल भी पढ़ता था, उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, बट ही हैड द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज उसको बोलते हैं एडजस्टेड इन हिज कोर्स. जब वो निकल के बाहर आया एंड ही बिकेम अ प्रोफेशनल, तो वो सिग्निफिकेंट अच्छी एक अप्रोच रखता था उस स्टूडेंट से जो कि इन चीजों से एक्सपोज्ड नहीं था, एक्सपोजर नहीं था जिसका इस चीज से. तो extracurricular activity actually adds your इसको बोलते हैं adds in your psychological health. And do note this, your physical health can come and go. ठीक है. It is with your illness, it is with what you eat. अगर हम लोग इसको बोलते हैं जो हमारे सेलेब्स होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, हमारे जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, अगर उनको कोई पर्टिकुलर फिजिक चाहिए होती है, what they do is they hire a personal trainer, they go to a nutritionist और वो उसके हिसाब से डाइट प्लान इसको शेप कर लेते हैं और जिस किस्म की उनको फिजिक चाहिए होती है they can have it. But what about the psychological health? That particular thing is
वैल्यूएबल जैम जो कि एक दफा स्पॉइल हो गया, उसके बाद देयर इज नो वे टू ब्रिंग इट बैक। ओके, तो साइकोलॉजिकली अपने आप को इनहेंस रखना। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज अ लॉ स्टूडेंट हु हैज नेवर बीन एंगेज्ड इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, और कितना डिमांडिंग प्रोफेशन है ये। इस प्रोफेशन के अंदर आप कानून बहुत अच्छा जानते हो, लेकिन अगर आपके सोशल कॉन्टेक्ट्स नहीं है, आपको क्लाइंट से डील करना नहीं आता, यू कैन नॉट गो आउट ऑफ द बॉक्स व्हाइल सॉल्विंग योर केस, आपको जज के मिजाज के मुताबिक बात करना नहीं आती, आपको रीडर्स, कोर्ट स्टाफ, पुलिस वाले, उनसे जो स्ट्रीट स्मार्टनेस होती है अगर वो नहीं आती, you can never be a good lawyer. Maybe you can be a good teacher of law, but you can never be a good lawyer. ठीक है? Now these everything which I quoted previously, ये सब psychological learnings है, आपकी skills हैं ये. Getting the point? You guys have to work on your skills more than the particular इसको बोलते हैं ना courses और CGPA के ऊपर काम करें. We have seen के एक बार बैरिस्टर आके हमारे पास कोर्ट्स में खड़ा होता है, पाकिस्तान के कोर्ट्स में खड़ा होता है, और एक LLB किया हुआ वकील जो कि बहुत डाउनग्रेडेड किसी इलाके से उठकर आता है, लेकिन क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है, वो बैरिस्टर्स को केस में मात दे देते। सो तो नेवर थिंक अबाउट दिस कि आपकी जो पढ़ाई है या थ्योरेटिकल लर्निंग है, दैट्स ऑल। ग्रेड्स कुछ नहीं करते हैं। आफ्टर आई गेस 2 years ऑफ योर डिग्री, आपके कितने भी अच्छे ग्रेड्स हो, दैट डज नॉट मैटर। यू विल सी अ पर्सन हु डज नॉट हैव अ गुड ग्रेड, बट यू विल सी हिम और हर एक्सेलिंग। थिंक द पॉइंट। तो इन सारी चीजों को थोड़ा सा पर्टिकुलरली अच्छे तरीके से देखें, और साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Mooting is one of the thing which can actually grab you those particular skills for your professional growth. इसके अलावा significance क्या है mooting की? Bar at law का course, it is considered as the इसको बोलते हैं most prestigious degree of law. कि भाई a person is a barrister, he has done bar at law from the university or school of the kings and queens. बैरिस्टर जब आप बार एट लॉ कर रहे होते हैं, व्हेन यू आर बिकमिंग द बैरिस्टर, जो उनका आखिरी साल होता है, 2 साल में से जो उनका आखिरी साल होता है, लिटरली 8 months, स्ट्रेट 8 months उनकी कोई थ्योरेटिकल लर्निंग नहीं होती। दे आर ओनली एंगेज इन द मूट कोर्ट कॉम्पिटिशंस। Getting the point why this moot court competition is very important for the professional growth of a lawyer. बार एट लॉ के अंदर वो इस चीज की सिग्निफिकेंस को इनहेंस करते हैं। दे से कि भाई आपने जो पढ़ लिया है दैट वाज सो इम्पोर्टेंट, बट एट द लास्ट ऑफ 8 months ऑफ योर कोर्स you guys have to just do the mooting. You have to build up your practical aspects. थ्योरी हम लोग कोर्स के अंदर चला लेंगे, ठीक है, मदद कर सकती है हमारी, लेकिन हमें दूसरी चीजें भी सीखनी है। गेटिंग द पॉइंट? तो सिग्निफिकेंस ये भी है, ये आपकी एक प्रैक्टिस के अंदर ऐड करता है। उसके बाद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस क्या होता है? आई एम श्योर यू गाइस मे नो जब जब खास तौर पे लड़कियों को इस चीज से रिलेट करने में आसानी होगी कि एक चीज होती है स्टेज फेयर। जब हम पहली दफा कभी रोस्टम पे जाके खड़े होते हैं, किसी डाइस के ऊपर जाके खड़े होते हैं, किसी स्टेज पे जाके खड़े होते हैं, या गिव अ प्रेजेंटेशन टू फुल क्लास, जो कि अच्छी खासी क्लास होती है, तो देयर इज अ फेयर इन आवर हार्ट। एक नर्वसनेस आ जाती है हमारे अंदर। वो नर्वसनेस जो होती है ना, आप यकीन करें, दैट्स फॉर द फर्स्ट टाइम एंड फॉर द लास्ट टाइम। आपने एक दफा उस फेयर को ओवरकम करना है, and then you will literally see wonders happening to you. Let me share you an experience of my own.
मैंने 2019 के अंदर अपना पहला मूड कोर्ट कंपटीशन किया था इन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। उसके अंदर जो हमारे जो राउंड था उसमें जजेस थे दो। आई स्टिल रिमेम्बर देयर नेम। वन वाज द नजम साकिब एंड द सेकंड वन वाज पुरू जवान। अच्छा, नजम साकिब वाज इज द सन ऑफ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार। तो uh, और माशाल्लाह से ये तो वेरी प्रोफाउंड एंड वेरी केपेबल पर्सन आल्सो। तो जब वो लोग बैठे हुए थे तो आई न्यू हिम। तो एक जाहिर सी बात है, एक साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट भी बढ़ गया था कि यार नजम साकिब इज सिटिंग बिफोर मी। मेरा पहला मूड कोर्ट कंपटीशन, वी न्यू नथिंग अबाउट मूड कोर्ट्स। हम लोग चले गए अंदर, पूरी प्लीडिंग हुई। अच्छा, मूड कोर्ट्स के अंदर जजेस यूजुअली ग्रिल यू। वो आपको किसी पर्टिकुलर इशू ऑफ द लॉ के ऊपर घुमा रहे होते हैं, आपसे सवालात पूछ रहे होते हैं। द मेन पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग इज कि आप इस चीज के ऊपर उबूर हासिल कर सको, इस चीज के ऊपर एक्सपर्टीज हासिल कर सको, हाउ टू सेटिस्फाई द एडजुडिकेटर। जस्ट बिकॉज कि आपको केस की कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, दैट डज नॉट मैटर्स। जज को आपने कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे दी, दैट मैटर्स। एडजुडिकेशन उसका काम, हमारा काम नहीं। ओके, तो हम लोगों ने बेंच को अच्छी तरीके से अपनी बात समझानी। जैसे वी हैव 35 पार्टिसिपेंट्स। मैं आप एक क्वेश्चन थ्रो कर रहा हूँ एंड आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स फॉर दिस। ठीक है? व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट? एडवोकेट का काम होता क्या है? मुझे एक लाइन के अंदर कोई भी एक आंसर आप अपने अपने हिसाब से लिखकर इस चैट बॉक्स के अंदर भेज दें। मीनवाइल, quite possible I want Pardeep to assist me in this कि मेरे पास अभी एक नोटिफिकेशन आई है, this meeting is going to over in 10 minutes। तो फिर दोबारा हम लोग ज्वाइन करेंगे इसको। जी जी सर, दोबारा होगी सेम लिंक से। चलें, ठीक है, परफेक्ट हो गया। ओके, वेट फॉर अ मोमेंट। ये जैसी एंड होगी ना मीटिंग, जब आप लोग इस चीज का आंसर लिखिएगा। ठीक है? द क्वेश्चन इज व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट? Pardeep, can you please write the question in the chat box? यस सर। अच्छा, और सिग्निफिकेंस क्या होती है मूटिंग की? इट बिल्ड्स योर प्रेजेंटेशन स्किल्स। आपको ये बात समझ में आती है कि हम लोग एक जुमले को किस तरीके से बोलें तो दूसरा सुनने वाला हमारी बात से कंपेल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर सम सर्टेन पीपल जो कि गुस्सा नहीं कर रहे होते, लड़ नहीं रहे होते, लेकिन उनका एक लहजा इस किस्म का होता है कि हम लोग कभी भी उनसे कोई बात सुनते हैं ना तो हम मतलब इतना उनको सीरियसली नहीं लेते। और उनके आसपास वाले भी बोल रहे थे, बोला यार इसका मिजाज ही ऐसा है या इसका बात करने का तरीका ही ऐसा है। और फिर हम लोग देखते हैं कि एक बंदा जो कि लिटरली आपको फ्रॉड कर रहा होता है आपके साथ, लेकिन उसका बात करने का तरीका इतना अच्छा होता है, वो आपको इतने अच्छे सेल्स पर्सन के स्किल्स से आपको कंपेल कर लेता है कि अक्सर हम कभी कोई चीज बाजार में लेने जाते हैं, हमें एक चीज नहीं चाहिए होती, तो हम लोग उसको मना करना मुश्किल हो जाता है कि नहीं यार हमें ये नहीं चाहिए। उसको मना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसका बात करने का तरीका अच्छा होता है, वो उसकी कंपेलिंग पावर बहुत अच्छी होती है। वहीं पे एक दूसरा बंदा होता है जो कि थोड़ा सा ऊंचा बोलता है, शायद थोड़ी सी बदतमीजी से बोलता है, उसकी बात कोई नहीं सुनता और उसको हम शायद थोड़ा सा डिटर करके भी मना कर देंगे, बोला यार एक दफा मना कर दिया ना, नहीं लेना तो नहीं लेना। गेटिंग द पॉइंट? तो आप लोगों के बात करने का तरीका, प्रेजेंटेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। ठीक है? और मूटिंग इज बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड योर प्रेजेंटेशन स्किल्स। उसके बाद मूटिंग और क्या करवाती है? मूटिंग आपका सोशल सर्कल बिल्ड कर। इमेजिन गोइंग टू अ कंपटीशन, traveling from one city to another city, going to a competition, meeting more than 10 teams। हर टीम के अंदर 3 से 4 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो एटलीस्ट 30 to 40 पीपल, उनके साथ 3-4 दिन जितने का भी कंपटीशन है वो गुजारना, देन एक्सेलिंग दैट कंपटीशन,
और आखिर में जब आप वापस आएंगे, नो मैटर यू हैव द ट्रॉफी और द अवार्ड और द सर्टिफिकेट और नॉट, यू हैव दोस कॉन्टैक्ट्स, 40 to 30 पीपल के कॉन्टैक्ट्स हैं. नाउ यू नो पीपल अराउंड द पाकिस्तान, यू नो लॉयर्स अराउंड द पाकिस्तान. ठीक है, वो लॉयर्स लिटरली आगे जाके व्हेन यू विल स्टेप इनटू योर प्रैक्टिकल लाइफ, खुदा ना खास्ता, फॉर एग्जांपल मैं इधर हैदराबाद में बैठा और मेरा कोई अजीज या कोई दोस्त लाहौर के अंदर किसी ऐसे मसले में फंस गया है वेयर ही नीड्स अ लीगल असिस्टेंस. तो एज बीइंग अ न्यू जनरेशन लॉयर, मेरे तो इतने सारे कॉन्टेक्ट्स हैं नहीं कि मैं भाई फौरन कॉल करूं और लाहौर से बंदा निकल के आ जाए और उसको जाके सपोर्ट कर ले. लेकिन I have done 15 to 16 moot court competitions and I have almost contact of almost every city, और बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारा एक हेल्दी रिलेशन रहा है उस कॉम्पिटिशन्स के अंदर. वी नेवर went to a moot court competition to win it, we went there to learn some. तो हमारा कभी मोटिव नहीं होता था हमें कोई कंपटीशन नहीं करना होता किसी भी चीज से. हम लोगों को बस इंटरेक्शंस करने होते थे, एक्सपोजर्स करने होते थे. हम लोगों को सारी चीजें, जितना हम अमाउंट ऑफ लर्निंग गेन कर सकते थे हम लोग वो गेन करते थे. और हमें कभी इस चीज का मामला नहीं होता था कि यार हम लोगों ने ये वाला कंपटीशन जीता नहीं या कुछ नहीं. मैंने 10 कॉम्पिटिशन्स किए हैं विदाउट एनी ट्रॉफी, विदाउट एनी रिकग्निशन. उसके बाद 11वां, 12वां, 13वां, 14th और 15th कंपटीशन के अंदर भी नेवर केम बैक विदाउट अ ट्रॉफी. तो नेवर थिंक कि पहले ही मूट कोर्ट कंपटीशन में यू विल एक्सेल और एस एवरीथिंग, दैट कैन नेवर हैपन. लेकिन स्लोली एंड स्टेडी विंस द रेस. ओके, अब वो जो बंदा मेरे पास लाहौर में जो फंस गया था, नाउ आई कैन इजीली कॉल अ फ्रेंड एंड से यार मेरा ये वाला दोस्त है, मसला हो गया था. वो उधर जाएगा, उसको असिस्ट कर देगा. जब वो बंदा लाहौर से बच बचा कर वापस आएगा हैदराबाद, ही वुड बी लाइक कि ये बहुत बड़ा वकील है और इसके कॉन्टैक्ट्स पूरे पाकिस्तान में. मतलब दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, हाउ द पीपल थिंक अबाउट अस. ठीक है, तो अगर मैं मूड कोर्ट्स नहीं कर रहा होता तो क्वाइट पॉसिबल मुझे तो 10 से 20 साल लग जाते ये वाले कॉन्टैक्ट्स बनाने में. बट यू गाइस हैव द अपॉर्चुनिटी इन योर स्टूडेंट फेज, इन योर एकेडमिक. बहरहाल, उसके अलावा मूड कोर्ट बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है आपकी पर्सनल ग्रोथ में, पर्सनल लर्निंग में. ठीक है, कैसे कंट्रीब्यूट करता है? आप ट्रैवलिंग करते हैं, कोई कॉम्पिटिशन. ट्रैवलिंग इज अ होलसम एक्सपीरियंस, दैट्स अ पर्टिकुलर थिंग जो कि बड़े बड़े फिलोसोफर्स बोलते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप जिसको बोलते हैं किसी बुक से नहीं हासिल कर सकते, किसी पर्टिकुलर पर्सन से हासिल नहीं कर सकते, आप ट्रैवल करने से हासिल करते. ठीक है, टीम वर्क करना आता है आपको उसमें. टीम वर्क इज अ वेरी, इसको बोलते हैं ना, बहुत मुश्किल काम होता है, कोई आसान काम नहीं होता टीम वर्क. ये इस पे हम लोग जो है ना डीपली डिस्कशन करते हैं इन दी नेक्स्ट सेशन जैसे ये खत्म हो जाएगा. डेडलाइंस को एडर करना आप सीखते हैं. ठीक है, एडरिंग टू डेडलाइंस, दैट्स अ स्किल, पर्टिकुलर स्किल. अच्छा, हमारे पास बहुत सारे जो हैं जवाब आ गए हैं. वन से के एडवोकेट की ड्यूटी होती है टू प्रूव व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग थ्रू प्रूफ्स एंड आर्गुमेंट्स. एक बोलते हैं इस्माइल इश्तियाक बोलते हैं कि एन एडवोकेट्स ड्यूटी इज टू असिस्ट द जज बाय प्रेजेंटिंग क्लियर आर्गुमेंट्स, प्रोवाइडिंग एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एंड क्लैरिफाइंग complex legal concepts. They should be prepared, professional, and responsive to the court's question, ultimately supporting the judge and upholding the law and delivering the justice. That's a very appropriate answer to this. Saud बोलते हैं to deal with the different cases whether from defense side or from the plaintiff side and try as best to prove. Client की legal advice देना, courts में representation करना, legal rights defend करना. To represent their clients in legal proceedings, to provide legal advice and to negotiate the settlements between the parties. Sana Sumru बोलती हैं कि an advocate's duty is to uphold justice by serving clients' best interests while adhering to legal and ethical standards. An advocate's duty is to provide skilled legal representation.
skilled legal representation, sound advice, and steadfast support to their clients, ensuring their voice is heard and their interests are protected in the pursuit of justice. ठीक है, ये सारे जितने भी हैं ये सब अच्छे इसको बोलते हैं लिखा हुआ. अच्छा, what is the last one? To uphold the law, represent and protect the client's interests with integrity and honesty, offer knowledgeable and unbiased legal guidance to the clients, uphold rule of law and promote social justice. अब now see कि एक क्वेश्चन के कितने सारे जवाब हो सकते हैं, and that's the beauty of the diversity. एक बात मैंने पूछी और आप लोगों ने उसको कितना अच्छे तरीके से elaborate करके समझाया मुझे. That's very impressive of you. And thank you for being attentive. The duty of an advocate is to represent and advise their clients with integrity, competence, and dedication, upholding the law and pursuing justice. Very fair enough. लेकिन ये जो go for second meeting because meeting has 1 minute. हाँ ठीक है, इश्माल इश्तियाक, your answer was most appropriate just because कि किसी भी lawyer का काम जस्टिस सर्व करना नहीं है, वो काम एडजुडिकेटर या जज का है.